क्लास 7 की हिस्ट्री में हम ऑटोमन्स को डिस्कस कर रहे थे। आज उसका यूनिट 3 है सिटी लाइफ। तो सबसे पहले सिटी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इन ऑटोमन सिटीज़ द सेंटर वाज फॉर पब्लिक लाइफ and around it were the living areas for the people, and the inner city had a kuliya, a group of building built around a mosque. जो कुलिया या बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स होता था, it provided religious, cultural and health services, public baths, schools, madrasas, hospitals, libraries, markets and food kitchen for the poor. And it was built by the sultan, his family or high officials. And money came from the shop and business revenues, and a supervisor managed money collection and spending. उसके बाद जो मार्केट्स होती थी उनमें जो चीज़ें होती थी, ऑलिव ऑयल, ग्रेन्स, शुगर, फ्लेक्स, सिल्क, हिना, डेट्स, कॉफ़ी बीन्स एंड एनिमल स्किन्स। एक मुहतसिब होता था, वो चेक डेली फॉर ऑनेस्टी एंड फेयर ट्रेड, एंड ही चेक्ड वेट्स एंड क्वाइंस, एंड मर्चेंट्स फॉलो कोर्ट सेट प्राइसेस, जो कि 10 to 12% जो है प्रॉफिट होता था उन पे। And rule breakers were punished, beaten or nailed to the shop doors. Residential areas surrounded the inner city, and wealthy and religious leaders lived near the kuliye. City divided into quarters based on origin, religion or job, and each quarter had an imam, administrator and a tax collector, and people from different quarters communicated happily. Outer city areas they had industries and tradespeople like tailors, dyers, butchers, blacksmiths, porters, saddlers, etc. Poor, beggars, thieves and jobless also lived here. Trade and caravans में यह है कि merchant caravans traveled between Constantinople, Belgrade, Egypt and North Africa. Village life थी, उसमें यह था कि villages were along the caravan trade routes, and some villages were walled for protection from the bandits, and each village had a muhtar, a village head chosen by the men, and muhtar collected taxes and handled the village duties, and village life was simple and people ate meals on unleavened bread plates. सिस्टम था जिसको डेव सर्मी सिस्टम जो है वो कहा जाता था। तो इस वर्ड का मतलब है टू कलेक्ट। तो इसमें यह था कि इट वाज स्टार्टेड बाय द सुल्तान मुराद II in 1432, and Christian boys from the Greek or Balkan villages were taken, and they worked on the farms for years to grow strong. Then they sent to the Constantinople for Islamic education, and then they became janissaries, सर्वेंट्स और आर्किटेक्ट्स। सो एक ये सिस्टम था जिसके तहत जो है जेनिसरीज, जो कि स्पेशल ग्रुप था आर्मी का, उसमें भी ये क्रिश्चियन बॉयज़ जो है वो होते थे, या ये सर्वेंट्स बनते थे या आर्किटेक्ट्स। कुड नॉट कॉन्टेक्ट देयर फैमिलीज एंड स्टेड लॉयल टू द सुल्तान एंड प्राउड ऑफ देयर वर्क, एंड नॉन एज द सुल्तान्स आईज, ईयर्स एंड हैंड्स। मीन्स जो चीज़ें, जो न्यूज़ उन तक पहुँचती थी वो ये सुल्तान को बताते थे। पैलेस रूल्स में यह है कि इन द पैलेस देयर वाज अ रूल ऑफ साइलेंस. नो वन स्पोक अनलेस द सुल्तान स्पोक फर्स्ट, एंड सर्वेंट्स कुड नॉट टॉक टू ईच अदर. So Sultan Suleiman I introduced sign language, Ixarate, to communicate silently. Sultan moved slowly to show royal dignity. Others moved quickly to obey orders.